तो यार सब लोग रिमिक्स आईडी पे आ जाओ, हम लोग थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एंड लाइक सर ने जो एप्लीकेशंस बताया, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम है जो हमारी इथीरियम की वर्चुअल मशीन पे चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे यहाँ बेसिकली इथीरियम के चेन के लिए है, ब्लॉकचेन के लिए, बिटकॉइन के लिए अलग है, सोलाना के लिए अलग है। सॉलिडिटी लैंग्वेज है जिसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड करते हैं, उसके लिए रिमिक्स आईडी है हमारी। इथेरियम वर्चुअल मशीन मैंने बोला, बेसिकली जो हमारा एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है ब्लॉकचेन में। तो मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं डालता हूँ, वो कंपाइल होगा और मेरे ब्लॉकचेन पे जाएगा। ब्लॉकचेन पे जाने का मतलब क्या हुआ, जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी पेयर्स हैं हमारे नेटवर्क में, उन सबके पास उस मेरे कोड की कॉपी है। और जो भी कंप्यूटर या नोड आइडल होगा, उसके रिसोर्सेज यूज करके वो चलता है। लाइक हमारे मशीन पे नहीं चल रहा है, वो एक नेटवर्क में चल रहा है पूरा प्रोग्राम। तो ऐसे वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, वो सब कवर करेंगे आने वाले सेशंस में। आज हम एक बेसिक सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, इसमें कॉन्स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अ, तो लाइक सबने रीमिक्स आईडी खोल ली अगर, तो मैसेज कर दो एक बार। ओके ओके, सबने खोल लिया। सो शैल वी स्टार्ट? लाइक पहली लाइन में डालता हूँ, लाइक pragma solidity। मैं सारी लाइन समझाऊंगा लाइन करके, आप पहले इसको डाल के देखो। लाइक ये हमारी पहली लाइन है जो हमारे कंपाइलर को डिफाइन करी कि हम सॉलिडिटी का कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। इस लाइन का बेसिकली यही मतलब है। ये इसलिए क्योंकि सॉलिडिटी ऐसी लैंग्वेज है बहुत कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बहुत इवॉल्व हो रही है, बहुत तेज तेज। लाइक हमें प्रॉपर वर्जनिंग की बहुत जरूरत है, हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं सॉलिडिटी को यूज करने के लिए। तो ये हमारा बेसिकली कंपाइलर मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं सिंपल स्टार्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, लाइक जैसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने डाल दिया। ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जैसे हम सी प्लस प्लस, जावा और भी लैंग्वेजेस देखते हैं, उसमें क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे उस क्लास का सिनोनिमस रहता है कॉन्ट्रैक्ट होता है डिफाइन करने के लिए, तो मैंने उसको एक नाम दे दिया। ये हमारे एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबने इतना कर लिया, सब यहाँ तक है ना? कोई भी डाउट है बस माइक परमिशन ऑन है, आप बोल देना। ओके, तो लाइक यहाँ पे पहले हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। इसमें वेरिएबल्स कैसे होते हैं, लाइक यूइंट सबसे इंटीजर जो वेरिएबल होता है, अनसाइंड इंटीजर कहते हैं। लाइक पॉजिटिव वैल्यूज है हमारा लिखा यूइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूइंट 256। लाइक इसकी साइज 256 बिट्स होती है। हम इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लाइक 128 और 16 और लाइक कितना भी हमें साइज चाहिए। बाय डिफॉल्ट यूइंट 256 बाइट्स का साइज है इसका। और फिर वेरिएबल का नेम दे दिया, लाइक सॉरी इट्स कीवर्ड। ये हमने एक वेरिएबल दे दिया। अब लाइक इसकी एक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक ये वेरिएबल है हमारा अभी इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक होता है, लेकिन मैंने इसको पब्लिक कर दिया। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के बाद कोई भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, एकदम कोई इसमें हिडन नहीं है। एंड अगर इसको इंटरनल किया तो ये इंटरनली एक्सेस होगा खाली। लाइक मैं एक नोट्स पे लेके जाना चाहूँगा। अमित ने नोट्स बनाया, मैं इसका अमित लिंक शेयर कर देना इसका प्लीज। डिफॉल्ट पब्लिक होता है कि प्राइवेट? क्या चीज? डिफॉल्ट पब्लिक होता है कि प्राइवेट? डिफॉल्ट प्राइवेट है। ये नोट्स हैं, तुम लोग यहाँ से रेफर भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइक हर चीज़ के बारे में दिया है। यूवेंट काउंट जैसे हमारा वेरिएबल होता है, अनसाइंड इंटीजर है हमारा यूवेंट, ये नॉन नेगेटिव नंबर लेगा। ओके, बेसिक सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्स्ट्रक्शन इसमें तो बहुत अभी डिफिकल्ट नहीं है। लाइक मैंने अपने वेरिएबल को पब्लिक कर दिया यहाँ पे भी। ठीक है, अगला वेरिएबल टाइप एक होता है इसमें एड्रेस। एड्रेस से माई एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, बेसिकली तुम एक नेटवर्क पे हो तो तुम्हारी एक आईडी होती है। यहाँ ब्लॉकचेन के केस में वो एक आईडी हमारा एड्रेस होता है। एड्रेस लाइक एक 32 बिट्स का एक हेक्साडेसिमल नंबर कोड होता है, वो हमारा एड्रेस होता है। अभी मैं एड्रेस के बारे में और दिखाऊंगा जब हम एक वॉलेट क्रिएट करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल एड्रेस बना दिया। मैं कंस्ट्रक्टर सबको पता होगा क्या होता है, सब सी कर ही रहे हैं क्लासेस में।
कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब हमने इनिशियलाइज किया प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, सबसे पहले ये मेथड फॉलो होगा और हमारे इनिशियल वेरिएबल्स को, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, इन्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मैं एड्रेस को पब्लिक कर दूंगा कि देख सके कि किसने डिप्लॉय किया। अब जैसे मैं सबको एक इनिशियल वैल्यू देता हूँ, काउंट को मैंने इनिशियल वैल्यू 0 दे दी एंड माय एड्रेस को मैसेज डॉट सेंडर। तो मैसेज डॉट सेंडर क्या है? मैसेज डॉट सेंडर बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जिसको ग्लोबली होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैसेज डॉट सेंडर यहाँ पे जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉल किया या जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया वो मेरा सेंडर है। यानी कि अगर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का सेंडर मैं हूँ, तो मेरा एड्रेस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कोई भी देख सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है। तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब बेसिकली मेरे पब्लिक वेरिएबल्स हैं, इनको मुझे कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं कॉल करने के लिए कि कैसे इनको देखें। जस्ट मैं आऊँगा, मैं इन्हें यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक किया, सब इतना कर चुके हैं तो प्लीज़ यार चैट में यहाँ तक समझ में आ जाएगा। गाइस ओके, तो सबने यहाँ पे आगे कंपाइल कर लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लाइक हम फिर ये आखिरी वाले टैब में आते हैं, हमारा डिप्लॉय सेक्शन है। यहाँ पे हम रन करके देख सकते हैं काम कैसे करता है। तो एनवायरनमेंट में हमारा जावास्क्रिप्ट वीएम रंडन एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। बेसिकली हमारे ब्राउजर के अंदर एक ब्लॉकचेन स्टार्ट कर देगा ये। और अकाउंट ऐसे कि मैंने बताया एड्रेसेस होते हैं, तो ये जो एड्रेस है 0x5b3, ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस से मैं डिप्लॉय करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। बस यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करना है, सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बन के आ जाएगा अपना। मैंने यहाँ पे 2 पब्लिक वेरिएबल्स लिखे थे, तो 2 पब्लिक वेरिएबल्स में दिखा रहे हैं, अकाउंट और एक माई एड्रेस। सब लोग यहाँ तक फॉलो कर दो। तो बेसिकली लाइक मैं इन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैंने माई एड्रेस किया तो मैसेज डॉट सेंडर ने मेरा ग्लोबल वेरिएबल कॉल किया और माई एड्रेस में शो हो गया। मैसेज डॉट सेंडर कौन था? जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कॉल किया। कॉन्ट्रैक्ट को कॉल किसने किया था? इस एड्रेस ने 5xb3, और वो यहाँ पे मेरे एड्रेस में आकर स्टोर हो चुका है 0x5b3। ये मेरा एड्रेस है जिसने इसको कॉल किया। अकाउंट को मैंने इनिशियल वैल्यू दी थी 0, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है मेरा। और काम करते हैं इसके हम लोग, एक सिंपल गेटर और सेटर फंक्शन बनाते हैं। गेटर डेटा डालने के लिए, सेटर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड यूज किया सिंपली फंक्शन बनाने के लिए। सेट काउंट फंक्शन का नाम होगा हमारे, कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं करेंगे। अगेन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन कॉल कर सकता है इसे। और फिर क्या करना है हमें? हमें काउंट की वैल्यू बढ़ानी है, काउंट प्लस प्लस। बस सिंपल मैंने काउंट की वैल्यू बढ़ा दी। यहाँ पे हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं क्या आता है। फिर हमने देखा कंपाइल, ऑटो कंपाइल पे लगाते हैं, कंपाइल करता रहेगा जैसे हम लिखते थे उसको। ठीक, अब देखो मेरे पास 2 ब्लू में बॉक्सेस हैं, एक ऑरेंज में बॉक्स है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली नेटवर्क पे क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ रीड करते हैं तो उसकी कॉस्ट नहीं होती है। मैं फ्री में रीड कर सकता हूँ, बट मैं जब कोई फंक्शन ऐसा कॉल करूंगा जो वैल्यू राइट कर रहा है या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है, तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है। बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि मैंने कोई चीज़ चेंज की तो वो सारे नेटवर्क को बताना पड़ेगा कि मैंने कुछ चेंज किया है, सबके लेजर में वो चीज़ सिंक हो रहे कि हाँ काउंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। सबको चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये बताने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, कुछ एनर्जी यूज होती है। तो इसलिए सारे फंक्शंस में कुछ ना कुछ हमें ईथर या जो भी करेंसी होगी हमें वो देनी पड़ती है। करंट एड्रेस दिखेंगे, तो एड्रेस मेरा ये है जिससे मैंने कॉल किया है 5xb3। काउंट की वैल्यू 0 है। मैं लाइक सेट काउंट करूंगा, देखो इसने एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब मैं काउंट को देखूंगा तो मेरी वैल्यू एक बढ़ चुकी है। मैं को इसके लिए कोई तो लाइक यहाँ पे मैंने सेट काउंट कर दिया, मेरे को कोई गेटर फंक्शन नहीं बनाना, उसकी पब्लिक वेरिएबल उसको मैं ऑटोमेटिकली गेट कर सकता हूँ। बट इन केस मैंने इसको पब्लिक नहीं किया, लाइक मैंने यहाँ से पब्लिक हटा दिया, अब ये एक इंटरनल फंक्शन है। अब मेरे को इसको गेट करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन गेट काउंट एक फंक्शन है, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना, हम कुछ यहाँ सेट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक फंक्शन होगा ये। और खाली व्यू, व्यू भी एक मॉडिफायर है। व्यू बेसिकली क्या होता है कि हम चीज कोई चीज देख रहे हैं, कुछ सेट नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं तो व्यू एक्सेस डाल देते हैं कि मेरा फंक्शन कोई गैस फी कुछ नहीं लेगा, बस एक चीज देखेगा वापस आ जाएगा।
और फिर यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है कि क्या ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैं एक यूएंट रिटर्न कर रहा हूँ, काउंट मेरा यूएंट टाइप का वेरिएबल था, मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ, तो इसलिए रिटर्न होता है। बस रिटर्न काउंट के मेरा गेट करने के लिए उसको फंक्शन हो गया है। इसको भी अब डिप्लॉय करके देखते हैं कैसे काम करता है। अगेन माय एड्रेस मैंने दिया। Utkarsh, sorry to interrupt. Yash has a question. ओके यस गो। He is asking, can you tell again how to deploy? Okay. You can first go to this tab, this compiler part, and you can click on the auto compile. If you're following me, then you can click on the auto compile. Then you can come to this last tab here, and then just JavaScript VM London first account, and just then click on deploy. That's it. Okay, fine. Yeah, so I was telling again, I've deployed this contract. It shows my address. Now get count. Currently the count is 0 as set by the constructor. I can get the count. And then I set count, call this function, sets the count. And then again I get it, it's increased. I set the count, I get the count, set and get. It works like that. Like so view and there are pure functions also, pure in which we don't read and we don't write. Those are called pure functions. You can look all that in our these docs which Amit has created. These are very good documentation if you want to learn for the first time. And so this is the basics of smart contracts. Nothing that if you are familiar with C++, JavaScript, or any of those basic languages with OOPS concept, you can easily get start making contracts. It's like very easy. Just building blocks in this make them together. It's a start. So next, we should talk about what are wallets. So I want you all to go on this website metamask.io. We are following please. Please drop a text in the chat if you are following. Yeah. So you all are on the MetaMask. So let me explain what are these wallets which we all talk about. There are different types of wallets going on in the crypto space. Like there are physical wallets in which we store our cash, and there are wallets like GPay and the Paytm which store a cash from our account. Okay, so these are MetaMask, and there are several wallets, crypto wallets, which store a cryptocurrency. I some time ago shared a post on the official WhatsApp group of the Web3 chapter, which explains how these wallets work. So you can look into that if, on that group. Um, so MetaMask is just it stores our cryptocurrency on different networks. So let's do a hands-on and you will get a better understanding. Let's just click on the download. It's a Chrome extension. Install MetaMask for Chrome. It's a very small extension. After you have downloaded, please drop a text that the installation is complete. Yeah. See the MetaMask is installed now. So first time when we click on the MetaMask, we come on this page, this box welcome us. Okay. So when you're on this page, please drop a text. Okay, is everyone following? Okay. So just click on get started and let's see what it says. So create a wallet. And we don't have a previous wallet. We'll start from scratch. This will create a new wallet and a secret recovery phase. We'll talk about what is that. Create a wallet. Just agree on this and create a password for the wallet. This is the secret recovery phase page. So what happens is there is a public key and a private key, and the address which I talked about, it's the public key. Like this is available on the network, and I can see
who am I, what's my address, and what am I doing with that address and all that. And then there's a private key. The private key is a seed. Like I can generate my public key from the private key, and if I lose my private key, then my account is gone. I don't have any access to it. It can be hacked. So like if I own cryptocurrencies, if I own NFTs in my wallet, it's of utmost importance to save the private key from malicious people and the bad actors in the network. So this is a secret key. I will reveal that. So this is it's called the BIP39 secret key phrase. That's the technical term for that. This is a 12-word key, which through which I can regenerate my private key if I ever lose that. So apart from the private key, this is the next most important thing which I need to secure. So just remind me later. You can save that and create a wallet, and you need to save that. It's a very important thing. This is the seed phrase from which your private key public key can be generated again. You will see that these are funny words, but yeah, it's important. So like yeah, I am on my wallet page. This is my wallet. You can see that I am on the Ethereum mainnet currently, and I have 0 Ethereum. Uh, uh, it's everyone on this page. Okay. Okay. So currently we can't buy the main Ethereum. It's very expensive. So we'll go on test networks to test our smart contract and see how it all works. So just click on this and go to the settings part. Come down here, in the advanced section, and just show test networks. You just have to toggle this on. Just drop a message if you're following. So the settings and then advanced, and then just show test networks. You can also do that show conversion on test networks. Has everyone done that? So like in the drop down menu, I can see that there are various test networks with which we can work. We are going to work with this Ring-B test network. It's like the most popular network to test our smart contracts with. We'll switch to that. And just close this, come to a remix ID. And you can now click on this and you will see this is the Ethereum wallet. We don't have any Ether currently. So we can't do anything. We are on the Ring-B test network. So I'll tell you how to get the free fake Ether for our testing networks. Just go on this linkbfaucet.com. I'll drop the link. You can get the free testing Ether from this website to test the smart contracts. You can just go on this website, um, click on the account number. This is the public address, the public key, and just paste that key here. And you can just click send me. That's it. Uh, I took some Ether today, so that's why I cannot withdraw from it. You all will be able to do that. Has everyone done that? Surely in a short amount of time, you will receive zero point 0.1 Ether in your wallets. Should we move forward? Yeah, guys, say something in the chat. Not working for you, okay. There's an under faucet. We call these faucets from which we can take some. We'll go on this, yeah. If that's not working, you can go on this.
Yeah, I got ether from this faucet.chain link. You can go on there, and if you are unable to get ether from there, you can use this faucet. Also, I'd like to show you one thing. This is a transaction hash which I got from the transaction, like sending requests complete. Yeah, see, I got zero point 0.1 ether in my account. It's the test ether. It does not have, like, it's showing 203 USD, but it doesn't have any value. When I click on this transaction hash, I come on this page. This is some weird page that you see, ether scan. It shows the transaction hash and block. This is my address. Sorry, you can see that this is my 0AA7. This is my address. So this address, somebody who is sitting on this address, some company, yeah, it will basically, it's a smart contract. This is the address of a smart contract. It sent me zero point 0.1 ether. This is me. And this is my account. It sent me this ether. This transaction was recorded on this block number. And this is the block number. The transaction had this hash. So when we say that the blockchain is completely transparent, we have the proof. We have these block explorers where we can see what transactions are happening, who is doing that transactions, and how it is all being recorded. So this is the value. This is all. When I click on this ether scan, these are all the transactions which are happening on the Ethereum network, on the Ring-B network. We can also go on the main net. So this is a test net. So if I would have known your addresses, your MetaMask addresses, I could just search here your address and see what all transactions are happening. So if like anyone would want to share the address, I can show that. Up to anyone? Okay, so like okay, okay. I will take that. I just pasted that. So, so see, 1 minute ago there was a transfer of zero point 0.1 ether from this contract, the same faucet which I used, to his account. Like I can do that. I can set that. Yeah. So there were two transactions, 0.1 ETH and 0.1 ETH from two different contracts to this account. Like when we say that it is transparent, and we can see that, we can see all the data that's flowing through the blockchain. We can also go on the mainnet with Ethereum mainnet. We can see that of the Bitcoin, of the Solana, of any network. There are block explorers for every network which on which we can see. Okay, so one more. Okay, so also two transactions, 0.5 Bitcoin, and that's it. An old account. Okay, so we can see that. So let's also, okay, we are back on the remix ID. Let's also try to deploy this contract on the main network. Sorry, on the main network, I think, on the Ring-B test network. I just have to click on this environment and the injected Web3. What is injected Web3? So when I install MetaMask, MetaMask is a tool which injects all the Web3 functionalities in a browser. Like if I try to access any website which is Web3 compliant and uses the paradigms of Web3, we could only access that if I have a MetaMask or some wallet installed on my browser. Then it gives me access to do that. So when I click on the injected Web3, uh, no injected Web3 found nature provider, active and running. Okay, so yeah. So it's asking me to connect MetaMask with this website. So any website, any Web3 website which you will connect, it will show a prompt in this way. Like first you have to connect the MetaMask with that website. So I'll connect this account. I'm connecting. So it's connected. It's showing my address. My address is 0.1 ether. It's all deriving that. Like you can make these applications with yourself. There's a library in JavaScript and also in Python. Web3 it's called. You can just use that, and you can get all these information from your wallet, like your account number, how much ether do you have, what are transactions you are making. So this is the contract. I set the environment to injected Web3. It has my account. The cash limit you can just skip that. It's an advanced portion. So everyone is following, then we can deploy this. Okay, like just click on the deploy part.
So like when I say I was deploying on the virtual machine, it wasn't asking for these transactions and all. But now it's deploying on the real network of the Ringui, the real Ringui network. So like my transaction, so it will take some amount of money to deploy this, and because my transaction is going to all the nodes in the network, who are verifying that this is a valid contract, it doesn't have any malicious things and all that. So I'll have to pay to deploy this. So I'm paying from my from the test ether. To confirm this, and you view on Etherscan it's giving, okay. Like I'll go on the Etherscan, it's showing this transaction is pending. So like I have deployed my contract. Now it's currently mining. The miners who mine on the blockchain, they are mining my contract. Like they are verifying and everything and doing it. So currently it's showing the block and timestamping is pending. Contract creation, everything is here. I can see that from here it's showing that it's done. It's the mining part is only left. So I can see this contract is deployed at 0xb7e. Just copy this address, copy. It's the contract. Okay. We will go on the ringp.etherscan.io. I can also like how I searched your accounts, just entered my contract's address and just click on search. That's it. So this was the contract creation. It's saying okay, from 0A7, this is my account which I showed. 0A7, this is my account, and you can see some ether, there's some less ether in my account that's used for deployment. And the block was this, it was mined on this block. This was the transaction hash, and this is the contract creation method and everything. Okay. This is the bytecode. These are all the compiled part. I can see I can decompile it and get back all the contract and all that. So the events, there's some advanced portion which we can discuss later. So this is basically a smart contract, the basics of it, how we deploy it, and how we can see on the Etherscan what all is happening. Like if anyone will transact with my like, let me show you my address. I can get now. See, it will take some time. When we get back to the contract, it will take some time to show that this address and deployed contract. We get the count. It gives 0. So these are only read operations. Nothing will show it. Okay. So, but now we'll do a write operation, set count. See what happens. If I set count, so I told you that it costs some money to write it on the blockchain. See, it's costing me $0.035. It's all fake. It's costing me this amount to write on the blockchain. I will just confirm this, and this transaction will get mined first. Like it's a transaction, we can see that it's getting mined. Okay. So see the transaction mined is giving a green tick that I have included. Now let's again get count. Now you can see that it's increased. But now everyone on the node knows that the value of count is increased to 1. And I did that by sending a transaction to them. Now when I go and see in my contract, contract. Yeah, it's not updated here. I think it's getting mined. So all the transactions which happen on a contract, it will list here down, like what all happened and everything. All the events will be listed here down only. Yeah, but that was the basic of creating a smart contract. That's on my side. If anyone has any questions, just please ask them. Has everyone understood the basic concepts of creating a contract and deploying it and MetaMask? Okay. Yeah, so that was from my side, the basics of contract. We are finishing with this workshop hands-on session. We'll be organizing more such sessions in the future after the exam. Thank you, Rohit sir and Utkarsh, for spreading your knowledge with us. Our session comes to an end. I thank you all for joining us. I hope you all learned a lot. But we have Yeah, one more surprise for you guys. With all the knowledge you guys have gained today, we are looking forward to provide projects on the same. A link will be shared afterwards to anyone who is interested in being the part of the project can fill that form. Along with that, a feedback form will also be provided. I hope you have a great day ahead.